बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन is the process through which a DNA produce RNA, or we can say that about the transfer of genetic information from DNA to RNA is called as transcription. DNA is genetic material. It is the blueprint of body design. The how DNA express the genetic trait. DNA express the genetic trait by transferring the genetic information to mRNA, and this mRNA, RNA, tRNA takes part in synthesis of protein. As the protein synthesized, then the phenotypic trait appear. So here we will discuss about the transcription unit, and how this transcription takes place. As you know, in the prokaryotic cell, there is DNA dependent RNA polymerase that plays important role in synthesis of RNA, mRNA, tRNA. But in eukaryotic cell, there are three types of DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase first, second and third for transcription of different type of RNA. Here we will see at first the transcription unit. Transcription unit consists of the structural gene. Suppose the DNA, it has two strands. The one strand of 3 to 5 polarity, another strand of 5 to 3 polarity. So this is the structural gene, and this structural gene, this strand is called as template strand. This strand is template strand, and this is called as coding strand. Coding strand. During transcription, only one strand of DNA transcript RNA. Coding strand will not transcript RNA. Because if both strands will transcript RNA, then there will be double-stranded RNA. They will overlap, then stop the protein synthesis. Or if both strands will transcript RNA, then two type of genetic information will be given. One strand will give one type of genetic information, other will give other type of genetic information. Then the same gene will produce two type of protein. That is also create complicacy. That's why during transcription, only one strand of DNA will transcript RNA, and especially the template strand that have 3 to 5 polarity. During transcription, there are some the promoter and terminator. Promoter initiate the transcription, and other is terminator which stop the transcription. So this is promoter, and here is terminator. So the transcription unit contains template strand, coding strand, promoter and terminator. So this template and coding strand both collectively, this is the structural gene, and here is the promoter that initiates the transcription and terminator that stop the transcription. Promoter is the sigma factor, terminator is the rho factor. Now, this template strand transfer the genetic information which are present in the base sequence in the form of codon on mRNA. Let us see how this transfer. Suppose here these three polarity, 3 to 5 polarity, suppose here is the TAC, here is the CAC, here is the CTC, here is the AAA, here is the AAG, and here the ATC at the thing. Suppose the template strand, this is the
template strand. And what will be this coding strand? Suppose here is the coding strand in 5 to 3 direction. This is the coding strand. This coding strand contain what? The A, T, G, C का G, T, G, here G, A, G, here T, and here AAC means TT, G, and here ATC means TAG. So, if in the template strand there is a thymine, then in coding strand there will be adenine. If here adenine, then thymine. Here cytosine and guanine. So, this is the position. Means in the DNA always A bind with double bond with thymine, adenine bind with double bond with thymine, and guanine bind with triple bond with cytosine. But in RNA what will happen? In the RNA, adenine bind with double bond with uracil and guanine bind with triple bond with cytosine. So in the RNA at the place of thymine, here is uracil. The thymine is methyl uracil. It means in the DNA AT, then in RNA AU. Or suppose here T, then in the coding strand, this is the coding strand. Both have sequence of the base, different base of sequence. If suppose both helix will transfer genetic information to mRNA, then two type of mRNA will develop. Then two type of protein will synthesize. So it will create complication. Or suppose this will also form mRNA, this will also form mRNA. Then one will have double stranded mRNA. Then they will get overlap. Then there will be no chance of protein synthesis. कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. If both strand of DNA will start transcription, then what will happen? If both strand of DNA will start transcription, then either two different type of protein will synthesized by same gene, or both will overlap, then stop the protein synthesis. So it will create complication. That's why only template strand of DNA will transcript mRNA. Now, why this is called as coding strand? क्यों इसको coding strand कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है, एक ही डीएनए का. लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड से सपोज mRNA यहाँ बनने लगा, यहाँ पे mRNA बनने लगा. अब mRNA किस डायरेक्शन में बनेगा? इन 5 to 3 डायरेक्शन. 5 to 3 डायरेक्शन mRNA will synthesize. तो on the template strand this mRNA will produce. तो template strand contain here T, then what will come here? T, then what will come here? A. But here is the A in template strand, then A bind with U in RNA, then here what will come? U, and C, then G, here C, then G, A, then U, C, then G, C, then G, T, A, C, G, here A, then here U, here A, U, here suppose the G, then here U, C, and here ATC, the A means U, here T means A, and G, C. तो आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो बेस सीक्वेंस है उसी के मुताबिक यहाँ कोडान आ गए mRNA पर. तो ये कोडान में जो बेस आए, कोडान के रूप में जो बेस mRNA पे आए, यहाँ पे A कोडिंग स्ट्रैंड में भी है, यहाँ पे G कोडिंग स्ट्रैंड में भी G, लेकिन यहाँ पे U, यहाँ T. तो कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ T है, थाइमिन है, लेकिन आरएनए बनेगा तो यहाँ U हो जाएगा. यहाँ GUG, तो यहाँ GTG, T की जगह U आ गया. यहाँ GAG, यहाँ भी है, यहाँ भी GAG है. यहाँ TTT है तो यहाँ UUU है, यहाँ TTG है तो यहाँ UUC है, यहाँ UAG है तो यहाँ UTA. तो आप देख सकते हैं कि T की जगह U आ गया. जो कोडिंग स्ट्रैंड में है वही mRNA में बेस सीक्वेंस है. केवल अंतर क्या है बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड में जहां T था, थाइमिन था,
आरएनए में उसके प्लेस पे यूरेसिल आ गया है। इसीलिए तो इसे कोडिंग स्टैंड कहते हैं, क्योंकि यह कोडिंग स्टैंड ठीक वैसा ही बेस सीक्वेंस रखता है जैसा कि टेम्पलेट स्टैंड से ही आरएनए बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि इस कोडिंग स्टैंड में थायमिन की जगह पे यहाँ एमआरएनए में यूरेसिल होगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता। तो दिस इज टेम्पलेट स्टैंड दैट ओनली ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए, दैट ओनली ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। तो यहाँ पे देखिए एयूजी है, ये मिथियोनिन को कोड करेगा, जीयूजी है वायलिन को कोड करेगा, जीएजी है ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा, यूयूयू है फिनाइलएलानिन को कोड करेगा, यूयूसी है फिनाइलएलानिन कोड करेगा, और यूएजी स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। तो इस तरह से जो बेस सीक्वेंस टेम्पलेट स्टैंड का है वो क्या दिया, बेस सीक्वेंस ऑन एमआरएनए दैट इज कोडॉन, एंड दैट कोडॉन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। तो आपने देख लिया यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या है, प्रोमोटर, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, टर्मिनेटर,